एक स्टूडेंट क्लास 12 के स्टूडेंट ने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर को दे के गया। वो मैंने पेपर देखा, इट वाज एन इजी पेपर आई शुड से, उसका भी अच्छा गया और आई होप सबका ही अच्छा गया होगा। लेट अस डिस्कस द ग्रामर पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें आपको कंप्लीट करना था सेंटेंस। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पीजी वुडहाउस इज द फनीस्ट ऑथर आई हैव एवर रेड। तो आपको स्टार्ट करना था नो अदर, तो इट विल बी नो अदर ऑथर आई हैव एवर रेड एज फनी एज पीजी वुडहाउस। दूसरा था माइकल एंजेलो वॉज एन आर्किटेक्ट एंड अ पोएट। नॉट ओनली was Michelangelo architect, but he was also a poet. Number 3, Sarah said that she would come to my house the following day. Sarah following day क्या बन जाएगा? Tomorrow बन जाएगा। Sarah said to me, I will come to your house tomorrow. उसके बाद तो बड़ा इजी था। As soon as the student enter their classroom, the teacher welcomes them. No sooner then आएगा no sooner do the student enter their classroom then the teacher welcomes them. Last wala, only the wearer knows where the shoe pinches. None but the wearer knows where the shoe pinches. उसके बाद fill in the blanks तो बड़ा ही easy था। We must carry on despite the challenges we come across. The police promised to carry out a thorough investigation. He's sure to appeal against the judgment. The leader appealed to the public. The experienced doctor found it easy to deal with your patients. This particular shop deals in organic food. The fresh college graduate jumped at the first offer of the job. My mother advised me not to jump to conclusion. The signboard in the park read keep off off the lawn. It is not easy to keep up with the rapidly changing fashion. चलो इसके बाद आपके ब्रैकेट में वर्ड्स थे। रोमन 3 appropriate form of verb यूज करना था given in the bracket। चलिए, a young man had a beautiful garden in his mansion. As he loved flowers, shrubs and trees, he tended to the garden himself. Next to his mansion there was a small house in which lived an old man, lived. One day when the young man was expecting some special guest, he took extra care in tending to the garden. He pulled the weeds, trimmed the shrubs, combed the moss and spent a long time meticulously raking up and carefully arranging all the dry autumn leaves. As he worked, the old man watched him with interest from across the wall that separated their houses. When he had finished, the young man stood back to admire ही रहेगा his work. Isn't it beautiful? He called out to the old man. Yes, replied the old man, but there's something missing. Help me over this wall and I'll put it right for you. After a slight hesitation, the young man lifted the old fellow over and sat him down. Slowly the old man walked to the tree near the center of the garden, grabbed it by the trunk and shook it. Leaves showered down all over the garden and formed a beautiful carpet. तो आपके आंसर में एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूँ। Lived, expecting, tending, trimmed, raking, washed, separated, admire, lifted और showered। अच्छा, उसके बाद आपको पैसेज रीड करके आंसर देना था। तो पहला जो क्वेश्चन था, गिवन बिलो आर 3 वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फाइंड द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग इन द पैसेज। फेसेस, तो काउंटेनेंसेस का मीनिंग वही होता है बिकॉज उसका मीनिंग होता है पर्सन फेस और फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। वॉक्स पर्पसली, तो स्ट्राइड्स होगा इसका बिकॉज स्ट्राइड्स का मीनिंग भी होता है मेक गुड प्रोग्रेस, प्रेशियस तो वैल्यूबल होगा। ठीक है, तो बड़ा इजी था ये। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यू था। तो पहले वाला एमसीक्यू का आंसर होगा ए, आई बिलीव। वी सैट इन अ रो एट द बैक ऑफ द रूम। दूसरे वाले का ऑप्शन सी होगा, दे लेफ्ट द हाउस एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। और तीसरे वाले का एमसीक्यू का ही सेल्स पुअर गुड्स बट चार्जेस फैंसी प्राइजेस। चलो, आप लोग के अब लिटरेचर पेपर है। एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग।